Hello friends, welcome to the fun class number 16 of the video lecture series Permutation and Combination. Okay, भाई सब बेसिक्स खत्म हो गया अभी. Permutation, combination, सब basic foundation सब okay. Now we are ready to crack the tricky questions where the examiner may ask you to solve the questions in which you have to utilize the concept of the permutation and combination. भाई एक ही क्वेश्चन में पी एंड सी आपको यूज करना है. ओके, एक ही क्वेश्चन में आपको परमिटेशन भी लगाना है और कॉम्बिनेशन भी लगाना है. ओके, सो लेट्स नेम इट एज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. सो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1. डेफिनेटली the shortcut tricks and tips you will get if and only if you have seen my previous videos. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे है, क्या क्या कौन से कंडीशंस पे कौन से ट्रिक्स लगाना है, तो प्लीज गो एंड चेक आउट माय प्लेलिस्ट. ओके, with the same confidence let's start the first question. How many words using 4 consonants and 3 vowels can be made from 12 consonants and 4 vowels if all the letters are distinct? क्या क्या दिया है अपने पास, क्या करना है, मुझे एक वर्ड चाहिए. हाउ मेनी वर्ड्स, ओके, जिसमें 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवेल्स मुझे यूज करना है. एंड 4 कॉन्सोनेंट्स कितने निकालना है, 12 कॉन्सोनेंट्स से मुझे 4 कॉन्सोनेंट्स निकालना है. एंड फ्रॉम द 4 वॉवेल्स आई हैव टू सिलेक्ट 3 वॉवेल्स. ओके, सिंपल से चेक करो. ओके, 12 कॉन्सोनेंट्स है अपने पास, उसमें से 4 निकालना है. सो हाउ यू ड्रॉ दिस, सो दिस इज नथिंग बट 12C4. ओके, 4 वॉवेल्स में से मुझे 3 वॉवेल सेलेक्ट करना है. सो 4 वॉवेल्स में से मुझे 3 वॉवेल सेलेक्ट करना है. सो हाउ यू डू दिस, इट इज नथिंग 4C3. ओके, सो एंड है दोनों में, एंड है ना. सो इफ एंड इज देयर व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई. सो इज दिस योर आंसर? हो गया ना भाई, सिलेक्शन हो गया. दीज मेनी वर्ड्स आर पॉसिबल. इज इट ट्रू? नो. व्हाई नॉट? सर दिस इज, ये तो सिर्फ सिलेक्शन हो गया ना, वर्ड्स किधर हो गए? नहीं. ओके, नाउ out of these 12 and 4, out of these 16 letters you have selected 7 letters, 4 plus 3 7 letters. So for this selection of these 7 letters you have these many ways. For the selection of these 7 letters you have these many ways. Okay, अभी अपने पास 7 letters है. Now I have the 7 letters. Now using those 7 letters I have to find out how many words I can form. So how many words you can form using 7 letters? Permutation part number 1. So 7 different objects can be arranged in 7 factorial ways. Okay, so what is your answer then? Multiply. And है ना, एक तो आपको लेटर सेलेक्ट करने हैं एंड उसके बाद आपको चेक करने के हाउ मेनी वर्ड्स आई कैन फॉर्म. ओके, सो व्हाट विल बी योर आंसर देन? सो इट इज नथिंग बट 12C4 into 4C3 into 7 factorial. Now if you open this, so 12C4 is nothing but 12, 11, 10, 9 divided by 1, 2, 3, 4. 4C3 is nothing but 4C1 which is 4 only. Okay, and we know that 7 factorial is nothing but 5040. देखो क्या क्या कट रहा है. सो 4 3 12, 2 ये 5, सो 45 इंटू 11. ये मल्टीप्लीकेशन विथ 11 बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, ये 0, 4 चौक 16 और ये 5 चौक 20. ओके, ये 20. ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट यू विल गेट इज, सो इसका मल्टीप्लीकेशन इज 4 as it is, 5 as it is, and 4 plus 5 is 9 into 20160. so this is your answer. solve कर लो, check कर लो क्या क्या आंसर है. okay, so these many words are possible if the given condition अपने को satisfy करना है. okay, क्या क्या किया है, 12 में से letters उठाए, 4 में से first we have seen the selection and we have done the permutation. Okay, so these are the questions in which you have to use both permutation and combination. Next question,
देयर आर 5 मैथ्स बुक्स एंड 4 फिजिक्स बुक्स. ओके, 5 मैथ्स के हैं एंड 4 फिजिक्स के हैं. In how many ways can they be arranged such that no physics books together? Okay, very good. No together means what? No together means alternate case. No together means alternate case. कौन साथ में नहीं चाहिए? फिजिक्स साथ में नहीं चाहिए, तो फर्स्ट किसको आप अरेंज करोगे? मैथ्स को अरेंज करोगे. ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट M1, M2, M3, M4 and M5. These are the 5 maths books. 5 maths books. In how many ways you can arrange these 5 maths book? Which is nothing but 5 factorial ways. Yes or no? Now check for the physics how many places you have. For physics I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now this is what, this is a standard arrangement where no two objects can be together. अभी यहाँ पे फिजिक्स डालो और यहाँ पे डालो, साथ में एक है नो टू फिजिक्स, उन दोनों के नो टू फिजिक्स बुक मीन्स व्हाट, इन बिटवीन टू फिजिक्स बुक देयर शुड बी वन मैथ्स बुक. ओके, नाउ 4 physics books you have to place. For the first physics books, how many places you have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. For the first physics book, for P1 you have 6 places. Then P2 के लिए कितनी फीस? 5. P3 के लिए कितने रहेंगे फिर? बिकॉज एक एक ऑक्यूपाई हो रहा है ना, सो P3 के लिए कितना रहेगा? 4. P2 के लिए, सॉरी P4 के लिए कितने रहेंगे फिर? इट इज 3. Okay, so what would be our answer then? Okay, so 5 factorial into these 4. Okay, so your answer is what? 5 factorial into 6 into 5 into 4 into 3. So ये ना, ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, which is nothing but 6P4. Out of 6 places you have to permute, arrange 4 books. 4. Okay, 6P4 is nothing but 6, 5, 4, 3. But again, don't go with the formula. Okay, fundamental important. So what is this? This is my final answer. Open kar lo, you will get the answer. Next. On a railway route, there are 20 stations. Okay. What is the number of different tickets required in order that it may be possible to travel from every station to every other station? अरे बाप रे, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है ये कि भाई मेरे पास 20 स्टेशन है, तो मुझे टोटल कितने टिकट्स लेने पड़ेंगे सो दैट मैं हर एक स्टेशन पे जा सकता हूँ फ्रॉम एवरी अदर स्टेशन. ठीक है, अभी 20 स्टेशन इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो लेट्स यूज वन स्मॉल नंबर. सपोज अपने पास 3 स्टेशन है, A, B and C. Now how many tickets I require to go from A to B or A to C? Okay, every station from every other station. मतलब if you traveling starting from A, you have to travel to B and C. अगर B से ट्रैवल करोगे तो आपको A में भी जाना है और C को भी जाना है. अगर C से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको A को भी जाना है और B को भी जाना है. तो कितने टिकट्स लग रहे हैं यहाँ पे? 6 टिकट्स लग रहे हैं ना. वेरी गुड. ओके, in the second case, suppose you have 4 stations A, B, C, D. I am coming to one very simple trick. Okay, so for that trick first you understand this basic. Now if you start with A, you require these 3 tickets, B, C, D 3 tickets. If you start with B, you require A, C, D, ये 3 टिकट चाहिए आपको. C से स्टार्ट कर रहे तो A, B और D टिकट चाहिए. D से स्टार्ट करोगे तो A, B, C, ये 3 टिकट चाहिए. हाउ मेनी टिकट्स यू आर रिक्वायरिंग हियर इन दिस केस? अभी जब भी 4 स्टेशन रहेंगे तो ये 3, 3, 6, 9 और 12. ओके, यहाँ पे 12 टिकट्स लग रहे. व्हेन यू हैव 3 केसेस यू रिक्वायर 6. कुछ तो ट्रिक निकाल सकते हो क्या यहाँ से? वेरी गुड, definitely we can arrange, we can get a trick here. Okay, see here, this 6 can be written as 3 into 2. Okay, and this 12 can be written as 4 into 3. Now what is this trick is? This 3 is nothing but number of stations. This 3 is nothing but number of stations. Okay, and this 2 is what? 3 minus 2. Getting?
Similarly, this 4 is nothing but number of stations. What is this 3 is 4 minus 1. So general trick what we can do is, if there are n stations, then you require n into n minus 1 number of tickets. Please mark this, very very important. If there are n stations, then you require n into n minus 1 tickets. अभी आपके पास सपोज 100 stations रहेंगे तो सर 100 into 19, अभी आप कितने भी stations दे दो, I will definitely tell you कि मुझे कितने tickets लगने. So it is 9900 tickets I require. So 20 stations के लिए, so 20 into 19, which is nothing but 380 tickets I require to travel from every stations to every other station. Okay, so please mark this formula, n into n minus 1. Next, a group consists of 5 men and 5 women. If the number of different 5-person committees containing k men and 5 minus k women is 100. Okay, what is the value of k? Okay, so उन्होंने directly दिया कि in these many ways I can select k men and 5 minus k women. Read the question once again. Okay, बच्चों maximum students why they feel the topics are difficult is कि भाई वो लोग questions पढ़ते नहीं अच्छे से ना, कुछ questions पढ़ते नहीं, so they just blindly read the question. नहीं, ऐसा नहीं करना है. क्या दिया है और क्या निकलना है, this you have to first understand. A group consists of 5 men and 5 women. If the number of different 5-person committees containing k men, अभी 5 में से out of this 5 they have selected k men, and out of this 5 women they have selected 5 minus k women. Now this selection you can do in 100 ways. So what is the value of k they are asking. So 5 में से k in how many ways you can do this? This is nothing but 5ck. And 5 में से 5 women से 5 minus k in how many ways you can do it? Again 5c 5 minus k. In these many ways you can do it. Okay, very good. So क्या क्या बन गया अपने पास? And है ना? Okay, so 5ck and this and 5c 5 minus k, this is equals to 100 they have given. These many number of ways are there. Okay, then what is the value of k? अगर option, if we have the options, then this question become very very simple. Within 60 seconds you can solve this. अगर option नहीं रहेगा तो क्या? Okay, see here. अभी बच्चे बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूशन सही कर रहे हो आप सब क्वेश्चंस, एक प्रॉपर्टी यूज करो एक आधा, चलो यूज करते हैं. सपोज, so intentionally I have not given here options. Okay, so 5ck is nothing but 5 factorial divided by 5 minus k factorial. I am using the formula or the definition of combination you can say. So into k factorial into 5 factorial divided by 5 minus 5 plus k factorial into 5 minus k factorial, which is equals to 100. So what is formula is NCR is equals to n factorial upon n minus r factorial into r factorial. That formula I am using. Okay, so 5 factorial is nothing but 120. So it is 120 upon 5 minus k factorial into k factorial into 120 upon, so 5 cancel, it is k factorial into 5 minus k factorial, which is equals to 100. So these two zeros cancel. Okay, so 12 into 12 is 144 divided by, see, 5 minus k factorial, 5 minus k factorial, k factorial, k factorial. So can I write this k factorial into 5 minus k factorial whole square? Okay, this is equals to 1. Okay, so you take this on the LHS side, so it is equals to, you will get k factorial into 5 minus k factorial
whole square is equals to 144. So k factorial into 5 minus k factorial square root on both sides, which is equals to 12. Okay, so now you can substitute k factorial and 5 minus k factorial. So for k is equals to 1, 2, 3, you can try. So if I take k is equals to 1, so you will get 1 factorial into 5 minus 1 factorial, which is equals to 5 minus 1 factorial is 4 factorial, which is equals to 24. Nay, this is not the case. So 1 is not answer. So let's consider 2 factorial. So 2 factorial into 5 minus 2 is 3 factorial, which is equals to 2 into, so it is 2 factorial into 3 factorial is 6. So 12. Yes, this is our answer. Okay. So k is equals to 2 is our answer. So can we have, if I take k is equals to 3, so 3 factorial into 5 minus 3 is 2 factorial. Yes, ये भी आंसर चलेगा अपना. So it is 6 into 2, which is 6 into 2, which is again is equals to 12. Okay, so 2 or 3 is your answer. Okay, अभी ऑप्शन में से कैसा करेंगे? अभी ऑप्शन आपका ऐसा रहेगा, a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to 2 and 3, sorry 2 and 3, and d is equals to none. ऐसे ऑप्शंस रहेंगे. So then what you will do? डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, 5ck and 5c 5 minus k. You just try here. Okay, after this the video, you just try this question. You just substitute value, different values of k using these 4 options and check which option is correct. Okay, so these are the tricky questions, part number 1. In the next video again we are going to see few tricky questions. Okay, if you really like this video, please hit the like button. शेयर करो यार दोस्तों से. जितना आप एजुकेशन को स्प्रेड करोगे ना, उतना आपका अच्छा रहेगा. ओके, एंड सब्सक्राइब to my channel so that you won't miss any new upcoming videos. Thanks.